Assalamu alaikum students, how are you all people today? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. This is again Yusuf Khan with you related to this unit Pompeii the vanished city. इसके हवाले से हम लोग आज डिस्कस करेंगे. और students, so today we will be discussing answer the following questions. The reading and thinking skills in your book. As I tell you in my every lecture, keep the books right in front of you. तो आपके books में आप देख सकते हैं पेज नंबर 123 पे, ठीक है. 123 पे क्वेश्चंस आपके सामने हैं पोम्पाई वेनिस्ड सिटी के हवाले से. तो उसी के आंसर्स आज हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस के साथ आंसर्स कौन से हैं, ठीक है. सो दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू द बुक एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द आंसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक एट द question first. Okay, first question which you have here in the answer the following questions section: what was it that first sent people fleeing from Pompeii? Okay, Pompeii से वो कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से लोग वहां से निकल गए, वो कूच करना शुरू कर गए थे वहां पे. So that is the answer which they are asking for. जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें कुछ ट्रेमर्स वगैरह हुए थे. जो सबसे पहले वो आतिश फिशा फटने वाला था, उससे पहले की जो हालात उसने थे, जो जलजले के झटके थे कुछ, वो जब महसूस किए लोगों ने वहां पे, तो वो वहां से फरार हो गए थे, वो जगह छोड़ के वो चले गए थे. तो ये कुछ वजूहात थी that will mention on the board. Okay, so the answer would be the thing that first sent people fleeing, the thing that first sent people fleeing from Pompeii was the tremors. From Pompeii was the tremors that shook the countryside around, that shook the countryside around Vesuvius, around Mount Vesuvius की बात हो रही है. Okay, Vesuvius, accompanied by a deep rumbling sound, accompanied by a deep rumbling sound, accompanied by a deep rumbling sound that signaled the approaching end of, that signaled the approaching end of the volcano's long repose. Approaching the end of the volcano's long repose. Volcano's long repose. So this is the answer for the first question which you have right here. Okay, कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से पोम्पेई से लोग फरार होने लगे, वो जगह छोड़ के जाने लगे. That was the tremors shook it. Tremors वो होते हैं जो जमीन में जो झटके महसूस होते हैं जो जलजले की वजह से. So volcanoes जब फटते हैं तब भी जलजला आता है, ठीक है. So the same thing is here. So this is the answer for the first question here right in front of you. Now we go on to the second question which you have in your book. So what is the second question which you have in the book? How was Pompeii city before destruction? Okay, तबाही से पहले Pompeii city कैसा था? हम लोगों ने पढ़ा था लेसन में that it was a good well developed trading center, ठीक है. रोम इलाके का जो था बहुत ही अच्छा सा ट्रेडिंग सेंटर था और बहुत ही डेवलपिंग जगह थी. So Pompeii was a prosperous and a thriving city. Pompeii was a prosperous
and thriving city. Okay, so this is the answer. Pompeii was a prosperous and a thriving city. So it was developing and very, वो जो खुशहाली वाली जो शहर है, तो यहाँ पे खुशहाली थी इस वजह से क्योंकि वहाँ पे ट्रेड वगैरह सारा कुछ अच्छी तरह से चल रहा था. Okay. So now we have the third question in your book. Explain why some people chose to stay in Pompeii. Okay, कुछ लोग वहाँ पे रहने के लिए तैयार हो गए थे. वो क्यों, क्या वजह थी कि वो वहाँ पे रुकने के लिए तैयार हो गए थे. ठीक है. So the answer for the third question is some people chose to stay in Pompeii. Some people chose to stay in Pompeii. What was the reason? Why did they choose to stay? Because they were unwilling to abandon. Because they were unwilling to abandon their precious homes and profitable business. Their precious homes and profitable बिजनेस. ठीक है, वो अपने प्रेशियस होम्स जितने भी कीमती घर थे, उनकी जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस थी, वो छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दे स्टेड देयर. सो नाउ वी गो ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन व्हिच वी विल बी कंटिन्यूइंग. अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है. ओके, सो नाउ वी गो ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन हियर. द फोर्थ क्वेश्चन हियर इट इज what finally caused the death of those who stayed in Pompeii? Okay, what was the reason? Here again the reason पूछा गया है, causes पूछे गए हैं कि जो लोग वहां पे रुक गए थे उनकी मौत किस वजह से हुई थी. Okay, so the first thing as you know in our past lecture we discussed the lesson. उसमें साफ सीधी बात है, बताया गया था कि जब वो वोल्केनो फटा था, आतिशफिशा वो जो फटा था, तो उसमें से हॉट एश क्लाउड निकला था, राख का जो एक गुबार निकला था. उस गुबार की वजह से वो जो गांव की तरफ या उस शहर की तरफ, पोम्पे की तरफ आया था, उससे काफी लोग मरे थे उसमें. ठीक है. सो वी विल बी डिस्कसिंग द सेम इन द आंसर. If you want to note it down, you should note it down. I hope so. And the answer for the fourth question is a hot cloud of lightweight ash. A hot cloud of lightweight ash poured down the sides of the mountain. Poured down the sides of the mountain followed by rock fragments. Followed by the rock fragments made fluid by temperature as fragments made fluid by temperature. By temperature
as high as 400 degrees centigrade. As high as 400 degree centigrade. And finally took deadly aim at Pompeii, killing every person at Pompeii, killing every person remaining there. जो वहां पे रुक गए थे उन लोगों की जो मौत की वजह थी वो ये थे. ठीक है. So this was the answer for your fourth question. Now we go on to the fifth one. What is the fifth question? A suggestion has been asked here. Okay, suggest the reasons why Fiorelli insisted that discoveries were left in the place and not moved to museum. वो ऐसी क्या सजेशन थी, क्या राय उसने दी थी फ्योरेली ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट था वहां पे और डायरेक्टर भी बना था एक्सकेवेशन का इस शहर के लिए. उसने ऐसी कौन सी सजेशंस दी थी कि जो जो चीज़ें वहाँ से निकली हैं वो खुदाई से, एक्सकेवेशन से, तो उन चीज़ों को म्यूजियम की तरफ ना ले जाएं, रादर उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए. ठीक है. वी विल डिस्कस दैट थिंग. सो एज द वर्क प्रोसीडेड, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, एज द वर्क प्रोसीडेड, Fiorelli made sure that every new okay, Fiorelli made sure that every new object that emerged was given a precise description, not just of its appearance, and nature, but also of its position in relation, to other objects, So he insisted that whenever possible, new discoveries were
discoveries were left in place rather than left in place rather than removed for shipment to a then removed for shipment to a museum or a storehouse, to a museum or a storehouse. तो ये वजह थी कि फ्योरेली ने इस चीज पे उसने राय दी थी कि जो जो चीजें निकल रही हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो इनको यहां से निकालने की बजाय यहीं पे छोड़ दे ताकि वो दूसरी चीजों के साथ जो रिलेशन बना रही हैं, जो जो चीजें डिस्कवर हो रही हैं, नई नई चीजें खुदाई के दौरान, तो वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इनको यहां से निकाला ना जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, किसी म्यूजियम में रखने या किसी स्टोर हाउस में रखने से बेहतर है वो वहीं पे पड़ी रहें, ताकि जहां पे पड़ी है उनके साथ और भी चीजें थी, उनके साथ इसको रिलेट किया जाए। सिंपल एज इट इज। ओके, सो दिस वाज द आंसर फॉर योर फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, and now we go on to the sixth question. Before noting down the answers, I hope you pause the video and write down the answers right in front of you. तो आप एक बार वीडियो पॉज करके सारे आंसर्स नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें। इससे ज़्यादा आपकी जो राइटिंग का स्किल है या राइटिंग हैंड राइटिंग आपकी होगी वो थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। ओके, डोंट जस्ट वॉच द वीडियो, रादर ट्राई टू राइट डाउन समथिंग, ताकि आपको राइटिंग के हवाले से भी काम जारी रहे। ठीक है, सो दिस इज द आंसर्स of fourth and fifth, and after that we will be continuing with the sixth answer. Now, what was the sixth question here in the lesson? Now let's see what is the sixth question here. What two features of its position made Pompeii an ideal trading link between the Italian interior and outside the world? उसकी ऐसी geographical position क्या थी जिसकी वजह से उसको ये इंपॉर्टेंस थी, तो उसके हवाले से पूछा गया है कि इटली और इंटीरियर के हवाले से इसमें ट्रेडिंग किस तरह होती थी। ठीक है, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या थी। सो द आंसर इज फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, छठे सवाल का आंसर है पोम्पेई वाज अ रीजनल सेंटर फॉर पोम्पेई वाज a regional center for क्या क्या चीजें थी उसमें, डाइंग और क्लॉथ मेकिंग। ठीक है, फॉर क्लॉथ मेकिंग एंड डाइंग एंड अ होम, क्लॉथ मेकिंग डाइंग and a home for many other craftsmen. Okay, dyeing and a home for many other craftsmen. Okay, so this is the answer for the sixth question. तो यहाँ पे सवाल ये था कि what two features of its position made Pompeii an ideal trading link between the Italian interior and outside the world? So the answer is Pompeii was a regional center. Pompeii was a regional center for cloth making, dyeing, and a home for many other craftsmen. Okay, so this was the answer for the sixth question. Now we move on to the seventh question. Why were some people reluctant to leave Pompeii? कुछ लोग वहां पे इतने बेचैन क्यों थे पोम्पेई छोड़ने के लिए? ठीक है, what was the reason? Some people were reluctant to leave. Some people were reluctant
to leave Pompeii because they were Pompeii because they were what, unwilling to abandon their precious homes and profitable business. ठीक है, why were some people reluctant to leave Mumbai? के कुछ लोग इस चीज से हिचकिचाहट क्यों कर रहे थे? द सेम सवाल, एक किस्म का वही सवाल कुछ वापस मेंशन किया गया है कि वो पहले पूछा गया था कि व्हाई दे चूज टू स्टे एंड नाउ व्हाई दे वर रिलक्टेंट, वो क्यों हिचकिचा रहे थे, छोड़ के जाने से हिचकिचा रहे थे कि नहीं हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे. सो द सेम आंसर इज हियर अगेन, बिकॉज दे वर अनविलिंग टू अबैंडन, unwilling to abandon. What were the things they were not willing to abandon? Their precious homes and profitable business. Okay, abandon their precious homes and profitable business. Okay, so this is the answer for the 7th question here. Now we move on to the 8th one. 8th question answer. What is the 8th question? Why was Pompeii skipped away from the world's memory till 1860? तो 1860 तक पोम्पेई को अपनी याददाश्त में से completely मिटा दिया गया था. वो क्या वजह थी, क्यों, क्या हुआ था? So the answer is, the early excavators had acted purely. The early excavators acted purely okay, the early excavators had acted purely for the sake